Hi, hello, and welcome back to you and to me. खुद ही अपनी तरफ से welcome back. But hi, I'm Pratiksha Mishra, and you're watching my review of Almost Pyaar with DJ Mohabbat, directed by Anurag Kashyap. मोहब्बत से ही तो क्रांति आएगी is a song that comes pretty late in the film, but that is essentially the message of the entire movie. And it's great to see that message क्योंकि अगर आपको याद होगा पार रंजीत की जो latest film आई थी उसमें भी the messaging that they put forward was that oh love is political, and it's true unless like you tick all the boxes of privilege or your partner actually also ticks all boxes of privilege, your love essentially is and is sometimes made political. Now the story is fluctuating between London and Dalhousie, in Himachal Pradesh. Now both pairs in these stories are played by Alaya F and Karan Mehta. Now the performances as such are not amazing, but they're not bad. It's Alaya F plays two characters, Aisha in London and Amrita in Dalhousie, and she gets the immaturities and the little like aisa jo quirks of both characters pretty well. There could have been more of a tonal shift between these characters, and that's also true for Karan Mehta. उनके जो दो कैरेक्टर्स हैं, एक है डीजे हरमीत इन लंडन और दूसरा अपना याकूब, अपना डलहौजी का स्पाइडरमैन. ही हैज़ दीज ऐसा एक्शन सीक्वेंसेस वेर ही इज जंपिंग ओवर बिल्डिंग्स, रनिंग अराउंड हियर एंड देयर, ऐसे ही बस. एंड इट्स वेरी रेमिनिसेंट, इट्स वेरी आयुष्मान खुराना इन एन एक्शन हीरो कोर. And that I realized later makes sense because the action director I think for both the films is the same. Ian Van Temperley I think does the action for this film also. The setting of the film does a lot of the heavy lifting और इसीलिए थोड़ा सा confusion होता है स्टार्टिंग में कि मतलब डबल रोल है या टाइम जंप है या फ्लैशबैक है या पुनर्जन्म है, क्या चल रहा है वो थोड़ा फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लगता है. इवेंचुअली जब लोगों के नाम पता चल जाते हैं और सेटिंग थोड़ा क्लियर हो जाता है, इट बिकम्स मच मोर क्लियर इन द फिल्म. Overall, however, the cast is pretty fun to watch. I feel like they're having fun with the film और वो दिखता है screen पे. That's again my major issue because I am a huge fan of non-linear storytelling. मतलब everything, everywhere, all at once is pretty much one of my favorite films at this point. But ये non-linear storytelling में जो एक strong structure की ज़रूरत होती है ना, वो इस film में नहीं दिखता है, and that affects the film a little bit. What I love about the film though is that जो ideas हैं, प्यार, मोहब्बत और जिसे कहते हैं हम जुनून, like the lines between love and obsession and frankly criminal behavior are all explored. और ठीक है, अनुराग कश्यप की फिल्म है, इतना सिंपल ऐसा बॉय मीट्स गर्ल मीट क्यूट तो नहीं होने वाला. Everything that you expect from an Anurag Kashyap film happens in this movie. The issue that I have, however, is that the screenplay isn't very like complex. It's not an issue as such because the film's messaging is pretty good. पर वो स्क्रीन प्ले थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो जाता है. टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ यू प्रिटी मच नो क्या होने वाला है एंड इट्स अ लिटिल हैवी हैंडेड. इफ आई हैड टू समराइज हाउ आई फील अबाउट ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत, आई वुड से दैट आई वाज नॉट अफेक्टेड बाय द फिल्म एज सच, बट आई वाज इंट्रीग्ड. मतलब ऐसे आंसू नहीं आए, पर आई एम इम्प्रेस्ड बाय द फिल्म. We see all of this happening. There's like two parallel storylines running and it's connected by one thread as almost god-like presence of this podcaster and this music creator called DJ Mohabbat, who is played by Vicky Kaushal. ये कोई surprise नहीं है, पूरी शहर में billboard लगे हुए हैं, everyone's figured it out by now. My favorite part about the film, especially about Amrita and Yaqub's story, is how simple it starts out. इतना simple शुरू, इतना pure शुरुआत है. उनका motive is so सिंपल. इट्स जस्ट ऐसा नहीं कि वो दोनों घर से भाग के चले गए हैं. ऑल दे वॉन्ट टू डू इज गो वॉच अ कॉन्सर्ट. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल प्रेमिस, पर चंद दिनों में यू सी हाउ अ लैंग्वेज ऑफ हेट, अ लैंग्वेज ऑफ essentially anger and resentment overshadows something very simple, and almost like a smoke screen is created of built by WhatsApp forwards and sensational journalism कि दुनिया में you'll see कि नफरत कितनी तेजी से फैलती है, and that's a very interesting thing to explore in a story about love, right? With Amrita, there's also this thing where she makes ting-tong videos and she uses a niqab to hide her identity. And you'll notice that her using that niqab to hide her identity and Yaqub actually living with his identity are so different. And वो बहुत ही अच्छे तरीके से explore हुआ है फिल्म में. I am also so amused by filmmakers using things like ting-tong and fake book. The copyright world is an amusing one. ऐसा तारक मेहता में नहीं होता था, जेठालाल की दुकान में फ्रिज के डब्बे पे मेन लोगो छुपा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है feels good. And but yeah, it's pretty much very similar to that. But also I think Ting Tong is a great name for an app if anyone's looking. तो अनुराग सर से ले लो उसका copyright. Now while all of this is happening, we also have the story running in London and उसमें प्यार कम criminal behavior थोड़ा ज़्यादा है.
बट बॉलीवुड में तो देखा ही होगा हमने ऐसा, मतलब हीरो 15-15 दिन तक हीरोइन को स्टॉक करता है एंड एवरीवनस लाइक ओ वाओ प्यार मोहब्बत. हियर हाउएवर इट्स स्मार्ट बिकॉज वो बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट लव. डीजे हरमीत इज अ DJ in London and he is essentially has a dream कि वो वापस इंडिया जाके अपना म्यूजिक बजाना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस ही कांट डू दैट. ठीक है, वो भी ऑब्वियसली डीजे मोहब्बत के बहुत बड़े फैन हैं एंड ही गेट्स टू मीट हिज हीरो ऑल्सो. एंड डीजे मोहब्बत उनको बहुत ही तगड़ा वाला ऐसा एग्जिस्टेंशियलिज्म वाला क्राइसिस में डाल देते हैं. प्रिटी मच गोज लाइक दिस. बहुत बहुत मेहनत के बाद आई हैव फाइनली फिनिश्ड माई ट्रैक एंड आई वॉन्ट यू टू लिसन टू इट इफ दैट्स फाइन. गाना काफ़ी अच्छा है, बट तुमने आगे का क्या सोचा है? मतलब हैव यू एवर वंडर्ड कि ऑल योर फियर्स आर योर्स अलोन और आगे अब कुछ नहीं बचा ऐसी ज़िंदगी में? कभी सोचा ऐसा कुछ? Now we see our girl Aisha. Okay, our girl Aisha is fully stalking him. Like she is actually stalking this man. But yeah, we have established that it's प्यार तो नहीं है ये. But even in this story, we kind of have a common thread running with the previous one. We see how patriarchy and like sensationalism and media uses women to kind of forward their bigotry, ironically taking away their agency in the process. They kind of ऐसा किसी और के कंधे पे डाल के बंदूक चलाने वाली बात होती है ना, वही होता है. And that is also again explored very very well in this film. Like we see at one point कि this set of parents is pretty much that they like, oh हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, but literally nothing has happened. Like it's not that deep. And this is again like that's the common thread that runs through all of it, is that how do we view love? Who do we view love for? मतलब if people are in love, why does it affect 15-16 people around them? And that's a lot of things that are explored in this film. Technicality की अगर बात करें तो Sylvester Fonseca is the DOP. He has worked in Manmarziyan, Dobara and Choked. I love Choked. We see a lot of action happens off camera, and this is honestly kudos to director Anurag Kashyap also. The way that he has structured the story in the sense कि तुम्हें स्क्रीन पे कब क्या दिख रहा है और स्टोरी के बारे में कब क्या पता चल रहा है is very very smartly done. There's also music by Amit Trivedi. I do have a problem with that because other than the Mohabbat से क्रांति आती है song, everything seems tonally very similar. And with everything that I've told you so far, जितना सब कुछ अभी जो बताया है उसको सब मिला के flaws and the pros, cons, whatever, my rating for Almost Pyaar with DJ Mohabbat is 3 stars out of 5.